Hello children, I welcome you all in my YouTube channel and Radha Online Classes. Today I am going to take class 6th and as we are doing chapter number 7, that is fractions. Let us start the new exercise, that is 7.4. The part first of this I am doing here. Here I have written the first one question. You have to see in the question I have drawn some figures. उन figures में आपको क्या करना है? You have to write the fraction of shaded part and उसको फिर ascending and descending order में arrange करना है. Simply this one. Okay, so let's read the question once again. Write shaded portion as fraction. Arrange them in ascending and descending order. आपको use करने हैं ये वाले sign उसके लिए. Okay, so I am firstly writing here इसके fractions. Okay, see how many parts are shaded? 1, 2, 3 parts are shaded. So it is 3 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total are 8. Here also 8. So this is 1, 2, 3, 4, 5 are shaded out of what? 8. Now 1, 2, 3, 4 are shaded out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are there and shaded is 1 by 8. So now what you have to do? You have to arrange in ascending order. सबसे पहले हम लोग ascending order में arrange कर लेते हैं. Ascending order. Ascending मतलब क्या होता है? Yes, ascending means what? छोटे से बड़ा, smaller to bigger. Okay. So start from here. देखो, as the denominator is what? Equal. तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें numerator को देख के which is having the smaller numerator, smallest numerator that will come first. तो सबसे कम shaded portion किसका है? That is 1 by 8. Okay. This is smaller than what? 1 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा. This is 3 by 8. उसके बाद देखो 4. This is 4 by 8. And after that is 5 by 8. This is 5 upon 8. So children, in this way you have to use this sign and do the question. Next come to descending order. Descending order. Just इसका opposite हो जाएगा. What will come first? 5 by 8 will come first. This is greater than what? 4 by 8. Open mouth means bigger. Okay, this is bigger. This one 3 by 8. Then after 1 by 8. So in this way I think it is very simple. Okay, in this way you have to do the question. Now let's see this one. अब यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are shaded out of what? Out of 9. Here 1, 2, 3, 4 are shaded out of what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is 9. Here 1, 2, 3 are shaded out of what? 9. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6 are shaded out of what? 9. Again the denominator is same. ओके, डिनोमिनेटर इज सेम. न्यूमरेटर आपको देख के इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके चिल्ड्रन, लेट्स सी. सबसे छोटा क्या है? 3 by 9 इज स्मॉलर देन व्हाट? 4 by 9 इज स्मॉलर देन व्हाट? 6 by 9 इज स्मॉलर देन व्हाट? 8 by 9. Say 3 by 9 is smallest. इसके बाद आएगा 4 by 9. Then after 6 by 9 and at last is which is the bigger one, that is 8 by 9. Now descending order में arrange कर लेते हैं. Just इसका opposite, that is 8 by 9 will come first. Then 6 by 9. Then after 4 by 9 and after that is 3 by 9. So in this way you have to do the first one question. Now let us come to the next question. Okay children, let's come to question number first ka C part. Okay, show 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 and 6 by 6 on number line. Okay, put appropriate sign between the fractions given. अच्छा, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें draw करना पड़ेगा what? Number line. So I am just drawing over here. Okay, this is the number line. Right, here is 0. ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 by 6. Okay, so 1,
and 2 I have taken here. Here I have taken 1, here I have taken 2. Okay. How many parts देख रहे हो आप? नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 6. That means 6 parts में इसको डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 should be at 1. Right? तो ये क्या हो जाएगा? Okay, what we have to mark? 2 by 6. This is 1 by 6. This is 1 by 6. This is 2 by 6. This is 3 by 6. 4 by 6. 5 by 6. Okay? And this is 6 upon 6. Right? इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं. This is 7 by 6. 8 by 6. 9 by 6. 10 by 6. 11 by 6 and this is what? 12 by 6. ओके, चेक करेंगे हमने सही किया है कि नहीं. 6 by 6 कट करेंगे, 1 मिला. दैट मीन्स वी हैव डन राइट. ओके, लेट्स कम टू, हमने रिप्रेजेंट कर लिया इसको नंबर लाइन में. नाउ सर्कल क्या क्या मार्क करना है? 2 by 6 को मार्क करना था, मार्क कर लिया. 4 by 6 को मार्क करना था, वी हैव डन. 8 by 6 मार्क हो गया एंड 6 by 6 मार्क्ड. ओके, तो पहला पार्ट हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सी put appropriate sign means greater and smaller than का sign लगाएंगे between the fractions given. Okay, now see 5 by 6 and 2 by 6. Whichever is to the right is greater number. अब देखते हैं 5 by 6 कहाँ है? Where is 5 by 6? Here is 5 by 6. Okay, here is 5 by 6 and 2 by 6. 2 by 6 को देखो. Which is greater? ये या फिर ये? इतना सा या इतना? Which is greater? Yes, 5 by 6 is greater, so put. Okay, now let's come to 3 by 6. अब 3 by 6 पे आ जाते हैं, मतलब this one. और 0 देख लो. 0 मतलब ये, और 3 by 6 मतलब इतना. Which is greater? Yes, definitely 3 by 6 is greater. Now 1 by 6. 1 by 6 is here. Okay, and 6 by 6. 6 by 6 is here. अब बताओ इतना पार्ट ग्रेटर होगा या इतना पार्ट ग्रेटर होगा? 6 by 6 is greater. So 6 by 6 is greater. Now 8 by 6, it is here. Okay, 8 by 6 is here, this much, and 5 by 6 is this much. Which is greater? 8 by 6 definitely. Okay, so in this way you have to do question number first plus C part. Okay, let's come to the next, that is you have to compare and put the appropriate sign. Now you can see अगर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर which is smaller fraction. Simple. ओके, तो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है. 6 सेम है, न्यूमरेटर 3 है, तो 3 इज स्मॉलर. दैट मीन्स इट विल बी लाइक दिस. नाउ लेट्स कम टू दिस वन. 1 by 7 एंड 1 by 4. यहाँ पे भी एक और चीज आपको दिमाग में रखनी है, यूनिट फ्रैक्शन है. ठीक है, 1 by 7th पार्ट आपको मिला, एक चॉकलेट का 7 पार्ट करके एक पार्ट आपको दे दिया. राइट, और एक चॉकलेट के, उसी चॉकलेट के हमने 4 पार्ट किए और एक पार्ट आपको दिया. तो विच इज बिगर वन? ठीक है, 7 पार्ट्स करेंगे तो छोटा पीस मिलेगा, 1 by 4 करेंगे तो बिगर पीस मिलेगा. सो दिस इज ग्रेटर. मतलब इफ द न्यूमरेटर इज सेम, अगर आपका न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर इज सेम, देन greater the denominator, smaller will be the fraction. Right? याद रखना है आपको, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा दैट इज स्मॉलर फ्रैक्शन. नेक्स्ट पे आ जाओ. सेम डिनोमिनेटर है, कोई बात ही नहीं है. ऊपर देखेंगे 4, ये तो छोटा है, दैट इज. अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लो न्यूमरेटर. अगेन दिस रूल विल फॉलो. न्यूमरेटर हमारे सेम है, बिगर द डिनोमिनेटर दैट मीन्स स्मॉलर विल बी द फ्रैक्शन. सो दिस इज स्मॉलर फ्रैक्शन. हियर इट इज. Okay, so in this way you have to do question number 2. Question number 3, make 5 more such pairs. Okay, this do by yourself. आगे हम लोग question number 4 से अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Till then, goodbye. सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले. Thank you.